देखिएगा, समझिएगा, ज़रूरी नहीं कि आप इसको करिएगा, ऐसा कुछ नहीं है, परंतु ये उनकी कंट्री में बहुत अच्छा काम कर रहा है। Now, our system starts when a new person joins, we sit down and we have a planning meeting with them, and we help them work on their who you know list. जो भी नया आदमी आता है उसके साथ हम बैठते हैं, इस तरीके से हम बात करते हैं कि जिनको वो जानते हैं, पहले उनकी लिस्ट बनाएं। Then we sit down with them and we show them how to contact people. And normally we'll have a phone session with people where we help them to phone their first 15 or 20 people. We help them put a script together so that they know what they're saying. जो है हम उनके साथ बैठते हैं, जो उन्होंने 15-20 लोगों की लिस्ट बनाई है, उनके साथ हम पहले प्रैक्टिकली जो है उनके साथ फ़ोन करते हैं, उन कस्टमर्स को, उन प्रोस्पेक्ट्स को जिनकी उन्होंने लिस्ट बनाई है, और जो है उसकी एक स्क्रिप्ट तैयार की जाती है पहले। Then we have the show stage, which is normally done in what we call a one-to-one, where we might sit down with somebody over a cup of coffee or a cup of tea, and we spend 40-45 minutes just giving them a brief explanation of the business. इसके बाद जो है हम अक्सर जो है 1-to-1 प्रेजेंटेशन के लिए बैठते हैं। वो अक्सर कहीं पे कहीं कॉफ़ी शॉप में होता है या कहीं पे भी कॉफ़ी जहाँ पीते हुए हम कर सकते हैं इसको, 40-45 मिनट का होता है। Then we invite people to a business presentation or an NDI. फिर हम उसके बाद जो है उस आदमी को अपनी जो बिजनेस प्रेजेंटेशन होता है उसमें इनवाइट करते हैं, या न्यू डिस्ट्रीब्यूटर इंफॉर्मेशन। Can you elaborate this? New distributor information. It's a training. It's like a BP, but more. Yeah. Yeah. And then people normally sign up here, and we have the planning meeting. And although there are other trainings people attend, they can basically start to take action straight away. And what does the action involve? Helping them work on their who you know list. इसके बाद जो है हम उनको, जब वो यहाँ पे साइन करते हैं बिजनेस प्रेजेंटेशन में, वो इंटरेस्टेड होते हैं काम करने में, फिर हम उनकी हेल्प करते हैं कि वो ट्रेनिंग्स अटेंड करें। ट्रेनिंग्स अटेंड करने के बाद दे टेक एक्शन, वो कुछ ना कुछ एक्शन लेते हैं, और उसमें जो है एक्शन, जो सबसे बड़ा एक्शन है, हम उनकी हेल्प करते हैं कि जो जिन लोगों को जानते हैं, कलीग्स हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनकी लिस्ट वो भी तैयार करें। Now, what's important about this is that a brand new person, as soon as they sign and buy a box, because we have this system in place, they can start to build a business immediately. हाँ, क्योंकि जब नया आदमी ने साइन किया है तो उसको सुविधा क्या होती है कि हमारे पास एक फुल फ्लेज्ड एक सिस्टम है, तैयार सिस्टम है, और उसको पता है कि इस सिस्टम से हम उसकी सहायता कर सकते हैं। It's a turnkey system. टर्न की मीन्स कि आप इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हो, आपको वेट करने की जरूरत नहीं। Has anyone here heard of franchising? Okay, name me some franchises. आपने फ्रेंचाइज सुना होगा। McDonald's is the one. AFC, KFC, Domino's Pizza. Okay, when you buy a franchise, what do you get for your money? A license, what else? A building, what else? A 24/7 headache, what else? A recipe, what else? When you buy a McDonald's for $1 million or whatever it costs over here, what is the most important thing you're getting? You're buying a guaranteed system for success. Yes. जब भी आप कोई फ्रेंचाइज ले रहे होते हैं, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स, आप सभी लोगों ने सुना होगा मैकडॉनल्ड्स, है ना? मैकडॉनल्ड्स जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे, जब आप मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंचाइज ले रहे होते हैं जिसके लिए आपको बहुत पैसा देना पड़ता है, तो आप जो है बहुत सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पे इन्होंने बताई कि आपको रेसिपी मिलती है, आपको ट्रेनिंग मिलती है, आपको 24 घंटे का सिरदर्द भी मिलता है, जैसे कई लोगों ने बताया। तो परंतु उसमें जो सबसे बड़ी जो चीज़ है, क्या मिलता है आपको? आपको जो सबसे बड़ी चीज़ मिलती है कि एक एश्योर्ड बिजनेस मिलता है कि ये बिजनेस चलेगा ही चलेगा। Yes, you get the building. Yes, you get the kitchen equipment. Yes, you get the marketing campaign. But what you're really buying is their system. Because to sell a franchise, you must have run a business by law in at least 2 separate locations. And it must have been run successfully
in 2 separate locations. या क्योंकि क्या है कि ये फ्रेंचाइज जो है आपको सिस्टम मिलता है, आपको किचन मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम मैकडॉनल्ड्स का ले रहे थे, और आपको जो है एक एश्योर्ड बिजनेस मिलता है, जैसे कि 2 लोकेशन है इन्होंने बताई कि दोनों लोकेशन में आपको एक एश्योर्ड बिजनेस मिलता है. This is the system that we have, and when you buy a McDonald's franchise, you would have to pay $1 million to get this. अगर आप यही मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंचाइज ले रहे होते तो मैकडॉनल्ड्स के फ्रेंचाइज में करीब $1 मिलियन, करीब 4 करोड़ रुपए जो है फीस होती है. But I'm giving you this for free. परंतु यहाँ पे फ्री है. Now, this may not be the system you use in India, and my advice to you is follow the system that your leaders use. Don't follow this one. This is just my example. This is what we use in the UK. But follow the system, because by everyone following the system, everyone can become successful. जो है ये इनका सिस्टम है यूके में, जो सक्सेसफुली वहाँ पे कर रहा है, परंतु जो आपके लीडर्स हैं हो सकता है उनके पास एक अलग सिस्टम हो, वो भी सक्सेसफुल सिस्टम हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है. तो ये जरूरी नहीं कि आप इस सिस्टम को करें, पर ये सिस्टम जो है एक सक्सेसफुल सिस्टम है. Do you know, the people I know won't succeed in forever, and I've had a lot of them. The people who don't succeed are the high-powered business people who come in and tell me how to run my business. And they tell me that they don't need to use my system, they'll invent one for themselves. इनके पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनको पास कहते हैं कि वो इनको समझाने की कोशिश करते हैं कि वो उनका सिस्टम लें, या जिस तरीके से वो काम करते हैं वैसे ये काम करें. कई लोग इनको समझाने की कोशिश करते हैं. And what they end up with is this. That's my car at the top, and that's their car at the bottom. Because they come in and they try to reinvent the wheel. इनके पास एक सिस्टम है, फुल प्रूफ सिस्टम है, 15 साल से काम कर रहा है, सक्सेसफुली काम कर रहा है. इनका सिस्टम वैसे ही जैसे कि ऊपर की कार है. वो लोग आते हैं, इनको एडवाइस करते हैं कि आप ऐसे काम मत करो, दूसरे तरीके से काम करो, परंतु अगर आप नीचे वाली कार को देखें तो ये कार कभी भी नहीं चलेगी. Which wheels do you think give you the smoother ride? कौन सा कार My जो है car. चलने वाली है? When people reinvent the system, they end up with square wheels, they get a bumpy ride, and very often they don't like the bumpy ride, so they quit. इस तरीके से जो लोग अपना सिस्टम लेके आते हैं, अक्सर होता है नेटवर्किंग में, नए लोग कुछ नया सिस्टम लेके आते हैं, कोशिश करते हैं उस सिस्टम को लागू करने की, और फिर आप देखते हैं कि इस उबड़ खाबड़ रास्ते में बहुत सारे उछाल मिलते हैं और फिर वो लोग क्विट कर जाते हैं. I'm not saying that there isn't room for good ideas. मैं ये नहीं कहता कि नए आइडियाज़ ज़रूरी नहीं है, नए आइडियाज़ की ज़रूरत है. Because as soon as I begin to think I'm arrogant enough to know everything in the business, that's when I start to wither and my business starts to wither. यस, क्योंकि क्या है, जिस समय कोई भी आदमी या विशेष रूप से अपने लिए कह रहे हैं कि जब मैं ऐसा सोचूं कि मेरे को सब कुछ आता है, मेरा सिस्टम फुल प्रूफ है, मेरे को कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है, वो समय ऐसा होगा जब मेरा बिजनेस जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा. But if you have a successful system that your leaders are using, why on earth wouldn't you want to use that system too? यस, परंतु सोचने वाली एक दूसरी बात भी है कि अगर आपके पास एक सिस्टम है और वो सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से, सुचारू तरीके से चल रहा है, तो क्या ज़रूरत है नए सिस्टम को लागू करने की? What's the key word in our business? The one key word in our business. Is it selling? No. Is it marketing? No. फॉरएवर में सबसे इंपॉर्टेंट The key word in building a successful business in forever is duplication. And what a system gives you is the ability to duplicate what you're doing. And that's why, in my experience, teachers are better at this than salespeople.
हमारे जो बिजनेस में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है वो है डुप्लीकेशन। Teachers are better than salespeople. हाँ, टीचर्स ये जो है जो आप जो पढ़ा सकते हैं वो जो है जो सेल्स वाले लोग हैं उनसे ज़्यादा जो है शिक्षक ज़्यादा महत्वपूर्ण लोग हैं। So let's go back to our system. ओके, So this is a system. This is the one we use, and it just is a continuous cycle. And you know, the great thing about this is that we're not being salespeople. We're not trying to close people into our business. We're not trying to sell people our business. Do you know what the word close means in a sales situation? Can you explain? या इट्स लाइक दिस कि हमारा जो बिजनेस है जैसे हमारा टॉकिंग बिजनेस है, कम्युनिकेशन का बिजनेस है, और अक्सर ऐसा होता है कि जब हम बोलना शुरू करते हैं तो बोलते ही चले जाते हैं, ऐसा होता है ना अक्सर, ठीक है ना, कि हमको ये पता नहीं लगता कि हम कितना बोलना है और कहाँ तक बोलना है। तो एक स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि जब आपको क्लोज द सेल वाली सिचुएशन होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपको बात खत्म करनी है, यहाँ Right. बात आगे करने से कोई फायदा नहीं है। What we're doing in our business is we are simply sorting people. We are sieving. You know when you have a sieve, do you know what a sieve is? या We हम are जो- sieving people. जैसे है हम छन्ने में छानते हैं किसी चीज़ को, हम अक्सर ये करते हैं कि हम लोगों की तुलनात्मक अध्ययन करते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे छन्ने में छानने वाली बात है कि उसमें से कौन अच्छे हैं, कौन बुरे हैं, कौन काम करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, उनके बीच में हम जो है एक तुलनात्मक अध्ययन करते रहते हैं। And what we're doing is we are sorting or sieving the interested people from the disinterested people. हम जो है हमेशा करते हैं एक छांटने की कोशिश करते हैं कि कौन इंटरेस्टेड है, कौन इस काम को नहीं करेंगे। Imagine this is your forever business, and it's a big funnel. Do you know what a funnel is? यस, Yeah, so all of your prospects go in your funnel, and they go round your cycle, which is in there. And then there's a little sieve here, and a lot of them stay here, but one or two fall through. I'm very good at art. If anyone wants to buy any of my slides, they are artistic masterpieces. ये एक आपका एफएलपी बिजनेस मान लो इस तरीके से है, जब हम छानने की कोशिश करते हैं हर एक चीज़ को, एक फनल है जो कि एक आपने एक इंस्ट्रूमेंट समझ लीजिए इसको, जो हमारे लेबोरेटरीज में होता है कि हर एक चीज़ को उसको फिल्टर करने का, छानने का, उसमें उसको प्यूरिफाई करने के लिए बेसिकली। तो आपका बिजनेस ये है कि इस तरीके से बहुत से लोग आते हैं और लोग जो हैं उसमें से कुछ लोग जो है वो उनकी स्थिति ऐसी है, बहुत सारे लोग ऊपर अटके हुए हैं जिनको आप छानते जा रहे हो, जिनको आप सोच रहे हो कि ये काम करेंगे या नहीं करेंगे, ये काम के हैं या ये काम के नहीं हैं। Most people aren't interested. And the mistake that many of us make when we join Forever is we have a small group of people, 20 or 30 people, and we spend all of our energy trying to convince those 20 or 30 people what a great opportunity we have. अक्सर ये होता है कि हमारा जब बिजनेस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का बिजनेस है, चल रहा है, थोड़ा बढ़ रहा है, जब आपके पास करीब करीब जैसे 20-25 लोग हो चुके हैं, तो आपका अक्सर ये होता है आपकी जो आपकी क्रियाएं होती हैं, जो आप काम कर रहे होते हैं, वो ये है कि आप सारे 20-25 लोगों के ऊपर अपना समय लगा रहे होते हैं। Ladies and gentlemen, we are not in the convincing business. We are in the sorting business. हम जो है हमारा काम जो है हमारा जो बिजनेस है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का, वो एक कन्विंसिंग बिजनेस नहीं है। हमारा जो काम है वो ये देखना है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो फॉरएवर में सक्सेसफुल होने के लिए तैयार हैं और कौन से वो लोग हैं जो कि फॉरएवर अभी नहीं करेंगे। सॉर्टिंग कर। If you speak to enough people, you will find enough people that want to join your business. अगर आप
बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, सफिशिएंट लोगों से, काफ़ी लोगों से बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो आप इसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं। If all you do is focus on the 20 or 30 people and make their lives a misery, all you do is give us a bad name. Yes. तो जो है कई बार अक्सर ये होता है कि जैसे 20-30 लोगों के सब लोगों को जो है आप बात करते हैं, कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और सब लोगों को एक साथ समझाने की कोशिश करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि आपको ही जो है एक बुरा नाम मिलता है। In fact, something I learned very early on in my forever career was some will, some won't. So what? Next. Some will, some won't. So what? Next. अक्सर ये होता है कि जब आप बहुत सारे लोगों से बात कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो आपको सुनेंगे, ध्यान देंगे, आपकी बात सुनेंगे, हो सकता है आपको ज्वाइन भी करें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि अनसुनी करते हैं, नेगेटिव होते हैं, आपकी बात ही नहीं सुनते हैं, इंटरेस्टेड ही नहीं है, आपको पता लग गया। तो अगर ये दोनों तरह के लोग हैं, कुछ ज्वाइन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो क्या हो गया? टेक इट, इट्स ए नॉर्मल, इट्स ए कैजुअल। तो क्या है, अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है कि जब किसी ने मना किया है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप दूसरे आदमी के पास जाइएगा। Has anyone here ever been to a dance? Anyone here ever been to a dance? Ask a question. A dance? Somebody here? No, has anyone here ever been in their life to a dance? जो है डांस वगैरह जो है आपने जीवन में कभी डांस वगैरह किया है? सभी ने किया होगा। Isn't it true that if you ask enough people to dance, somebody's going to dance with you? Yes. But you might have to ask 10 people to get one to dance with you. Yes. Isn't that true? Anyway, इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आपने किसी के साथ डांस करना है तो हो सकता है आपने एक से पूछा, जरूरी नहीं कि वो डांस करेगा, आपको हो सकता है 10 लोगों से पूछना पड़े कि आप मेरे साथ डांस करेंगे। So if you want lots of people to dance with in forever, you've got to ask lots of people to dance. Okay. तो इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में भी इसको भी इतना एक फन की तरह बताया, कितना अच्छा एग्जाम्पल है, वी शुड अप्रिशिएट कि इन्होंने एक डांस का एग्जाम्पल लिया है, कितना अच्छा एग्जाम्पल है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स भी जो है, जैसे कल रेक्स पॉन ने भी बोला है कि उनका ये हॉलीडे है, ये एवरीडे हॉलीडे, एंड ही वाज कीप ऑन टॉकिंग एंड टॉकिंग एंड टॉकिंग यस्टरडे है, कितने एनर्जी है। तो ये टेकन सच एग्जाम्पल, आई रियली अप्रिशिएट सर यू फॉर दिस डांस, आई मीन एग्जाम्पल। सो अगर आपने डांस करना है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जो एक डांस ही है, तो बहुत से लोगों से आपको हाथ मिलाना पड़ेगा, बहुत से लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। Good. Okay. So, there we are then. Let's move back to our cycle. And that's what this is. This is our sieve. What we do is we put people in the top through there, and they're coming through here. It's a bit like a, like a mill wheel. And you're grinding corn, let's say, and you're going to, all the chaff, do you know what I mean by chaff? Which is all the stuff that you don't want in the corn. Correct. Will all fall off, and that's and then you'll end up with some corn coming through the bottom. That's basically what we do. And, sorry, carry on. Yeah, it's like this. जैसे आपने देखा कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने धान के खेत में देखा है कि हर एक चीज़ जो है वो छनती है और जो है कूड़ा जो है वो निकल जाता है, और जो असली माल है, जो गेहूं है, स्पेशली आपने कुछ लोग पंजाब से भी आए हैं, या जैसे मैं एक किसान का बेटा हूं, तो मैं जानता हूं इस चीज़ का कि भाई जो है भूसा वगैरह वगैरह सब चला जाता है, पर जो असली चीज़ है वो आपके पास आ जाती है, ठीक है ना। उसमें एक छन्नी का एक सिस्टम होता है। इस तरीके से बहुत से लोग जो हैं, जो रियल्स लोग हैं, जो आपके साथ काम करेंगे, वो रह जाते हैं। At each stage in the cycle, some people are not going to be interested. So we write our list. We phone everyone on our list. And at that stage, a lot of people say they're not interested. Great. Don't care. So what? And then some of those people will agree that we can show them the business. And at that stage, some of them will say, not interested. We say, great. So what? But some will come to a business presentation.
And some people that come to a business presentation will say, I'm not interested. Great, so what? But some people will come to a business presentation and will register and we'll have a planning meeting with them. And that is great. तो ये जो छन्ने की जो बताई है कि जो आपने छन्ने में से चीज़ें निकालनी है, ये एफएलपी का बिजनेस इस तरीके से हम जो है कई लोगों को कांटेक्ट करते हैं, कुछ लोग सीधा ही मना कर देते हैं हम इंटरेस्टेड नहीं है, कोई बात नहीं, उसमें से कुछ इंटरेस्टेड होते हैं, बात सुनते हैं हमारी, उनको जो है हम कांटेक्ट करते हैं, उसके बाद वो इंटरेस्टेड नहीं है, कांटेक्ट करने के बाद भी इंटरेस्टेड नहीं है, कोई बात नहीं, उनको जो है हम ऑडियो टेप वगैरह वगैरह 1-to-1 प्रेजेंटेशन के बाद, परंतु इसमें से कुछ लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं, उनको हम बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, जैसे कि इन्होंने एनडीओ या कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, उसमें से कुछ लोग रियली में इंटरेस्टेड होते हैं जो कि ट्रेनिंग्स लेते हैं और उनके लिए हमारे पास एक एक्शन प्लान होता है, यही वो लोग होते हैं जो परमानेंटली आपके साथ काम करते हैं। Does anyone here manage or keep a record of their statistics? How many people they telephone? How many telephone calls they make to get a one-to-one? How many one-to-ones they do to get somebody coming to a business presentation? How many people to a business presentation you need to register somebody? Who keeps records like that? Can you translate? Yeah, it's like बहुत से ऐसे लोग हैं जो रिकॉर्ड रखते हैं इसका, इनका कहने का मतलब है कि जब 1-to-1 प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करते हैं किसी को, तो उसकी यू मीन द रिकॉर्डिंग ऑफ इट, हाँ, व्हाट इज दैट? अच्छा, ये बेसिकली या उसका कहने का मतलब आप उसका रिकॉर्ड रखते हैं कि आपने कितने लोगों को 1-to-1 प्रेजेंटेशन दिया, वो इनविटेशन दिया टेलीफोन में, उसका पूरा रिकॉर्ड कौन लोग रखते हैं? कौन लोग रखते हैं? आप सभी रखते होंगे मेरे ख्याल। नहीं रखते हैं? अगर आप Okay, because here's the reason. What if I told you, let's just say these were your stats. Let's just say you made 12 telephone calls. So you called 12 people to get 6 one-to-ones. And from the 6 one-to-ones that you did, 3 people came to a business opportunity meeting. BOM, business, what do you call it? Business presentation? BP? BOP. And for 3 people you got to a BOP, you registered 1 person. And you kept your statistics over a period of 3 months, and this is what you ended up with. So that you knew that for every 12 calls you made, you would end up with 1 assistant supervisor. How many people are keeping figures, statistics like this? How many people record their statistics? कितने लोग मानते हैं इस चीज़ को? इस तरीके से है कि आपने मान लो 12 लोगों की लिस्ट है आपके पास, उसमें से आपने जो है 6 लोगों को 1-to-1 प्रेजेंटेशन दिया, उसमें से 3 लोग बीओपी प्रोग्राम में आए और सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा है जिसने कि एप्लीकेशन फॉर्म साइन किया और वो आदमी जो है उसने 2 सीसी किए। How many people keep records like this? कितने लोग हैं जो कि इस तरीके से रिकॉर्ड रखते हैं? Hardly anyone. Let me tell you something. If you cannot measure it, you cannot manage it. करेक्ट। अगर आप इस तरीके से रिकॉर्ड नहीं रख सकते तो आप किस तरीके से मैनेज करेंगे इसको? If I told you, or if you knew from your statistics that every 12 calls you made, you sponsored 1 assistant supervisor, how many people here would be making 12 calls a day? वो लोग हाथ खड़ा करें जो कि ये मानते हैं कि अगर आप 12 फोन करते हैं तो आपको 1 आदमी मिलता है, तो कौन लोग हैं जो 12 फोन करने को तैयार होंगे? So why aren't you? Why aren't you? Why aren't you making 12 calls तो a फिर day? करते क्यों नहीं आप 12 कॉल? Listen, you've all just told me inhibitions, I'm scared, I can't do this. Listen, unless you understand about your statistics, how can you possibly be motivated? Just imagine if you got so good that for every 6 phone calls you made, you were sponsoring 1 assistant supervisor. Yes, आपको एक्साइटेड होना चाहिए, उत्साहित होना चाहिए कि अगर आपके पास 12 की लिस्ट है और आपने 6 लोगों को फोन किया
और इन 6 में से आपको एक असिस्टेंट सुपरवाइजर मिल गया तो आपको उत्साहित होना चाहिए. You should be excited. How many people here think that if they practice their phone calls, they may get that down from 12 to 10 or even 8 phone calls to get 6 one-to-ones? Who thinks they might get much better at making a phone call the more they practice? Yes. कौन लोग हैं जो इसकी प्रैक्टिस करेंगे जिनको जैसे 8 या 10 लोगों को फोन कर सकते हैं आप? What happens if you get good enough so that for every 6 one-to-ones, because you practice, you get 5 people coming to a business opportunity meeting? Who thinks that practicing, doing more one-to-ones would improve their statistics? कितने लोग समझते हैं कि अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो 6 लोग हैं 6 में से 3 लोग आए, ये हो सकता है 5 लोग हो जाए. And what about if you were getting 5 people to a business opportunity presentation? You'd be signing 4 people up. Who think they'd be doing much more one-to-ones and getting more people to be BOPs? तो कितने लोग समझते हैं कि ये जो है इसको आप जैसे 5 लोग कर सकते हैं बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने में, आप सफल हो सकते हैं 5 लोगों को अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें तो. And you know, this is where it gets really interesting, because I know that for every 10 people I register, and this is worst case, 1, not immediately, but over time, one of those people will go manager on average. ये इनका तजुर्बा है कई सालों का कि जो 10 लोग इन्होंने ट्राई किए थे, जैसे 10 लोगों का लिस्ट है, उसमें से जो एक आदमी है वो अल्टीमेटली मैनेजर बना है. No, for every 10 people I sponsor into the business, on average, one of them will go manager. Now, they may not go manager in the first 3 months, they may not go manager in the first year, they may not even go manager in the first 2 or 3 years, but I know, because I keep my statistics, that at least 1 in 10 people that I sponsor will end up as a manager. ये जरूरी नहीं है कि वो मैनेजर जो है 3 महीने में बने, 2 महीने में बने, 6 महीने में बने, 1 साल में बने या उसके बाद बने. परंतु क्या होता है, ये स्टैटिस्टिक्स रखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं कि अगर इन्होंने 10 लोग स्पॉन्सर किए थे तो उन सब का रिकॉर्ड इनके पास रहता है और इनका ये मानना है कि 10 में से एक आदमी जो है वो मैनेजर डेफिनेटली बना है. What that means is a manager makes me £1,200 a month. How much is that in? 96,000 rupees. One manager. So one manager will make me every month this. So basically, I have to make 120 phone calls to get me that. तो यहाँ पे बड़ा क्लियर है, इनका मानना है कि 10 लोग जो इन्होंने स्पॉन्सर किए थे उसमें से एक आदमी मैनेजर बना ही बना है और वो मैनेजर इनको हर महीने 96,000 रुपये, एक मैनेजर का एक जो नेटवर्क है 96,000 रुपये दे रहा है. तो अगर इनको इस तरीके से एक मैनेजर चाहिए तो एक मैनेजर की ये इनकम पाने के लिए 96,000 पाने के लिए उनको 120 कॉल करने पड़े. If I told you that if you made 120 phone calls, you would eventually end up with a manager making you 96,000 rupees a month, how many people would be making 120 phone calls a month? अगर आपको ये बोला जाए कि आपको 96,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे, सिर्फ आपको करना क्या है, आपको 120 कॉल करनी है. कौन कौन करेंगे? I'd make 500 calls. And you know what? This gentleman's right. And the reason you would is because you knew that that is what would happen